নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ষ্টাডি ৰেছফুলি ইউটিউব চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ আটাইকে স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত আমি দশম শ্ৰেণীৰ হিন্দী পাঠ্যপুথি আলোক ভাগ 2 হৰিবংশ ৰায় বচ্চন দেৱে লিখা जो बीत गई কবিতাটিৰ সাৰাংশ অসমীয়াত আলোচনা কৰিম। বলে তেন্তে ভিডিঅ'টি আৰম্ভ কৰো। यह कविता 4 भागों में लिखी गई है। आज के युग में कभी न कभी हम मानसिक परेशानियों से गुजरते हैं। ऐसी स्थिति में बच्चन जी की यह कविता हमें प्रेरित करती है कि हमें सब कुछ भूलकर कैसे जीवन पथ पर आगे बढ़ना चाहिए। এই কবিতাটো 4টা ভাগত লিখা হৈছে। আজিৰ যুগত কোনোবা নহয় কোনোবা সময়ত আমি মানসিক সমস্যাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ যাওঁ। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত বচ্চনজীৰ এই কবিতাটোৱে আমাক অনুপ্ৰেৰিত কৰে যে আমি কেনেকৈ সকলো পাহৰি জীৱনৰ পথত আগবাঢ়িব লাগে। कविता के पहले खंड में कवि यह कहना चाहता है कि जो समय बीत गई उसे भूलने में ही हमारी भलाई है। मिलना और बिछड़ना यह प्रकृति का नियम है। जीवन में कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारे काफी प्रिय है उनसे भी हमें बिछड़ना पड़ता है। इसे हमें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए। कवि इस तथ्य की पुष्टि करने के लिए उदाहरण स्वरूप आकाश में टूटते तारों से तुलना करता है और कहता है कि आकाश में रोज कितने तारे टूटते हैं। जो टूट जाते हैं वे फिर कभी नहीं मिलते, पर अंबर यानी कि आकाश टूटे हुए तारों पर कभी शौक नहीं मनाता है। इसलिए बीते हुए दुख पूर्ण समय को याद करना व्यर्थ है। কবিতাটোৰ প্ৰথম খণ্ডত কবিয়ে ক'ব বিচাৰে যে পাৰ হৈ যোৱা সময় বা অতীতক পাহৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে ভাল। মিলন বা লগ পোৱা আৰু বিদায় লোৱা অথবা পৃথক হোৱাটো বা আঁতৰি যোৱাটো হৈছে প্ৰকৃতিৰ নিয়ম। কেতিয়াবা জীৱনত এনেকুৱা হয় যে আমি অতি আপোন লোকসকলৰ পৰা আঁতৰি যাব লগা হয়। আমি ইয়াক সহজভাৱে লোৱা উচিত। উদাহৰণস্বৰূপে এই তথ্য নিশ্চিত কৰিবলৈ কবিয়ে আকাশৰ পপীয়া তৰাবোৰৰ সৈতে তুলনা কৰে আৰু কয় যে প্ৰতিদিনে কিমানটা তৰা যে আকাশত নোহোৱা হয় অৰ্থাৎ খহি পৰে। যিবোৰ তৰা জহি খহি পৰে নাইকিয়া হয় কেতিয়াও আৰু লগ নালাগে, কিন্তু আকাশখনে কেতিয়াও এই তৰাবোৰ জহি খহি পৰা কথালৈ শোক নকৰে, দুখ নকৰে। সেয়েহে অতীতৰ দুখৰ সময়বোৰ মনত ৰখাটো বৃথা। कविता के दूसरे खंड में कवि ने कुसुम यानी कि फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कविता के दूसरे खंड में कवि ने कुसुम यानी कि फूल के माध्यम से जीवन के रहस्य को समझाने का प्रयास किया है। कवि कहता है कि मधुबन यानी कि फूलों का बगीचा में कितनी कलियां सूख गई, कितनी लताएं यानी कि बल्लरियां मुरझा गई, परंतु जो सूख गई या मुरझा गई वे फिर कभी खिलती नहीं। पर मधुबन उन मुरझाए फूलों पर कभी शोर नहीं मचाते हैं। बीते हुए समय को पकड़ने का प्रयास व्यर्थ है। কবিতাটোৰ দ্বিতীয় খণ্ডত কবিজনে কুসুম ফুলৰ জৰিয়তে জীৱনৰ ৰহস্য ব্যাখ্যা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কবিজনে কয় যে মধুবনত অৰ্থাৎ ফুলৰ বাগিচাত কিমান কলি শুকাইছে, কিমান লতা শুকাইছে, কিন্তু যিবোৰ শুকাই গৈছে বা মৰহি গৈছে সেইবোৰ আৰু কেতিয়াও উভতি নাহে বা ফুলিব নোৱাৰে। কিন্তু মধুবনে কেতিয়াও সেই শুকাই যোৱা ফুলবোৰক লৈ হাহাকাৰ নকৰে অৰ্থাৎ নাকান্দে। অতীতক ধৰি ৰাখিবলৈ কৰা চেষ্টা বৃথা হয়। कविता के तीसरे अंश में बच्चन जी ने यह समझाने का प्रयास किया है कि जब हम जन्म लेते हैं तभी से हम मृत्यु की ओर बढ़ने लगते हैं। जन्म का मूल कारण ही मृत्यु है। कवि ने इन पंक्तियों में जीवन की तुलना मदिरालय से की है। मदिरालय में कितने ही प्याले टूटकर मिट्टी में मिल जाते हैं। जो टूट जाते हैं वह पुनः जुड़ नहीं पाते, परंतु टूटे प्यालों पर मदिरालय कभी नहीं पछताता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि हमारा शरीर मिट्टी का बना हुआ है और एक दिन मिट्टी में ही मिल जाएगा। परिवर्तन प्रकृति का शाश्वत नियम है। हमारा शरीर भी तो इस मिट्टी के प्याले की तरह ही है। কবিতাটোৰ তৃতীয় অংশত বচ্চনজীয়ে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিছে যে যেতিয়া আমাৰ জন্ম হয় তেতিয়াৰ পৰা আমি মৃত্যুৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ। জন্মৰ মূল কাৰণেই হৈছে মৃত্যু। কবিয়ে এই শাৰীবোৰত জীৱনৰ তুলনা মদিৰালয়ৰ লগত কৰিছে। মদিৰালয়ত বহুত কাপ বা পিয়লা ভাঙি মাটিত মিলি যায়। যিবোৰ ভাঙি যায় সেয়া কেতিয়াও আৰু জোৰা নালাগে, কিন্তু ভঙা পিয়লাবোৰৰ বাবে মদিৰালয়ে কেতিয়াও অনুশোচনা নকৰে। অৰ্থাৎ ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে যে আমাৰ শৰীৰ মাটিৰে নিৰ্মিত আৰু এদিন ই মাটিতেই মিলি যাব। পৰিৱৰ্তন হৈছে প্ৰকৃতিৰ চিৰন্তন নিয়ম। আমাৰ শৰীৰটোও এই মাটিৰ পিয়লাবোৰৰ দৰে।
कविता के चौथे अंश में बच्चन जी ने इस कविता का सार प्रस्तुत किया है। मृत्यु के समक्ष मनुष्य की सारी शक्तियां असमर्थ है। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति कमजोर है वह दुखपूर्ण समय को याद करता रहता है, परंतु जो व्यक्ति मानसिक रूप से दृढ़ होते हैं वे उस समय को याद कर अपना भविष्य बर्बाद नहीं करते। इसलिए कवि कहता है कि जो बीत गई सो बात गई। কবিতাটোৰ চতুৰ্থ অংশত বচ্চনজীয়ে এই কবিতাটোৰ সাৰাংশ উপস্থাপন কৰিছে। মানুহৰ সকলো শক্তি মৃত্যুৰ সন্মুখত অক্ষম। কবিয়ে যি বুজাইছে তাৰ তাৎপৰ্য হৈছে যে যিসকল ব্যক্তি দুৰ্বল হয় তেওঁলোকে দুখৰ দিনবোৰ মনত কৰি থাকে, কিন্তু যিসকল ব্যক্তি মানসিকভাৱে শক্তিশালী তেওঁলোকে সেই দিনবোৰ মনত কৰি তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যত অপচয় নকৰে। এই কাৰণে কবিয়ে কয় যে যিটো পাৰ হৈ গৈছে সেয়া গুচি গৈছে, অতীত হৈ গৈছে। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কবিতাৰ সাৰাংশ এইখিনিতে শেষ হ'ল। ভিডিঅ'টি চাই ভাল পালে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্টৰ লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিবা। থেংক ইউ।